Friends, welcome to my channel. Today we are going to cover a very important topic, which is on invitation letter for applying for visitor or super visa. ये बहुत ही important topic है, very crucial topic है. Before we start, I would like you to please like and subscribe the channel. Okay, please share the video to as many people as you can. So it really helps when you subscribe the channel. ये बहुत help करता है. So please friends, like and subscribe. Okay. So मैं आपको लेटर शो करने जा रहा हूँ, इन्विटेशन लेटर शो करूंगा, and I'm going to tell you each detail, and I want you to ensure you watch all the steps of the video, each part of the video, ताकि आप कोई मिस ना करो. So let's get quickly started. ये जो 4 documents हैं, ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि I'll show you. First is invitation letter, second is letter of support, proof of means of financial support, and then last is purpose of travel. ये बहुत ही important documents हैं before you apply or before somebody applies, to come to, Canada. All right. So now let me show you some important information. So this is a Canadian government website, canada.ca, जो कि आपको इसके बारे में पूरी information बताती है. Right. So this is what is required here. Right. But मेरा एक PPT बना है जिसमें आपको precise information मिल जाएगी. Right. So let's go and cover that. So information to include about parents and grandparents. So what you need is their complete name. आपको पता होना चाहिए. You should know their date of birth, उनका address, telephone number, your relationship. Is it your mother, father for whom you are applying, or a grandparent, right? क्या उनकी purpose है trip की? ये आपको specific बताना पड़ता है यहाँ पे letter में. And I'll show you the letter. How long the person plans to stay? Do they want to stay for 3 months? उनको 6 महीने रहना है, 4 महीने रहना है. You have to let them know where the person will stay and for how long he will pay for things. कितना टाइम के लिए रहना है, कहाँ पे रहेंगे वो लोग, क्या कहीं से मूव होंगे, उनका प्लान है. जस्ट अ हाई लेवल उनको डिटेल्स कैनेडियन एम्बेसी को चाहिए होती है. एंड व्हेन द पर्सन प्लान्स टू लीव कैनेडा, कब उनको वापस जाना है अपने कंट्री. इफ ही शी फ्रॉम इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, whatever country it is, you have to provide the details. अगर टिकट है ऑलरेडी आपके पास, that's well and good. सुपर वीजा में चाहिए होता है, विजिटर वीजा में नहीं चाहिए होता है. So ये कुछ चीजें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. Now next thing is you need the information about who is inviting. कौन आपको इन्वाइट कर रहा है, right? So you have your son, you have your daughter, you have your relative, जो आपको इन्वाइट कर रहा है. So invitation letter में ये आएगा, and I'm gonna show you the letter. उनका कंप्लीट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर इन कनाडा, जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है, द जॉब टाइटल, वो सिटीजन है या परमानेंट रेजिडेंट है, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट. ओके. इसके अलावा वी नीड अ फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट पर्सन इज अ सिटीजन और अ PR. तो उसके लिए उनका बर्थ सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप कार्ड या PR कार्ड चाहिए होगा, या लैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा टू प्रूव that you are a permanent resident. So anything out of these things. बाकी उनका डिटेल चाहिए होगा, उनका नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, ऑफ देयर स्पाउस, ऑफ देयर डिपेंडेंट कौन है. उसके बाद चाहिए होगा कि कितने लोग उस घर में रहेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो आपको इन्वाइट कर रहा है उसके घर में ऑलरेडी 5 लोग हैं, एंड ही इज इन्वाइटिंग हिज मदर एंड फादर. तो 5 + 2 7 लोग हैं टोटल, राइट, जो कि रहेंगे. तो उसके हिसाब से इनकम देखनी होती है कि पर्सन की इनकम कितनी है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी आर जस्ट कवर. नेक्स्ट थिंग इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो what you have to do is you have to provide a written and signed promise of financial support for your parents or grandparents in the entire stay in Canada. As specified, it's very clear. आपको लिखित देना होता है, written देना होता है कि आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे. उसके लिए फाइनेंशियल लेटर है आपके पास, फाइनेंशियल सपोर्ट का, विच आई एम गोना ब्रिंग इन टू द नेक्स्ट वीडियो, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसका कुछ पार्ट आपका अभी इन्विटेशन लेटर में भी मैं दिखाऊंगा. नेक्स्ट थिंग इज प्रूफ दैट यू मीट्स द मिनिमम इनकम. सो लीको, सो कहते हैं लो इनकम कटाओ. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, जैसे आप एक इनकम क्राइटेरिया होता है, लो इनकम क्राइटेरिया. सो फॉर एग्जाम्पल, you are a family of 5 people, right? तो आपको इनकम दिखानी होती है इतनी. मिनिमम नेसेसरी इनकम शुड बी दिस मच. ओके. 4 persons 49,000, 2 persons 33,000. दिस इज द मिनिमम इनकम जो आपको दिखानी होती है, दैट यू आर
qualifying minimum income. Okay, next thing about this is some visa officer may ask for a notary document, notarize your letter. So अगर आपका for example आपका document is in different language than English, suppose it's in Hindi or it's in African language, you need to go to your notary and उसको आपको English में convert करा के उसको stamp लगा के देना होता है, same document. Okay, you cannot send a document straight away in your regional language, okay, or your mother language. अगर आपका जैसे document for example आपका birth certificate है, it's in a different language other than English, you have to notarize it. They charge some money, very minimum money, and they provide you the same copy in English, okay, with the authorized copy from notary or advocate. Last thing is ये कुछ चीज़ें हैं इसमें, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड और सिटीजनशिप प्रूफ लगाना होता है इसमें जो आपको अप्लाई कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस दिखाना होता है, सपोर्टिंग लेटर जो कि मैं लेटर में करने जा रहा हूँ, एंड अ कॉपी ऑफ द पासपोर्ट. सो लेट्स सी द लेटर. ओके, ये एक सैम्पल लेटर है. आई एम गोना जस्ट create a letter real quick in front of you, whatever is the important part. So ये one page का letter है पूरा. I'm just gonna cover this part. So this is example, okay. So मैं इसको बनाने जा रहा हूँ आपके सामने. So what we need to do is we need to put a live example, okay. So example जैसे मैंने date यहाँ डाल रखी है. So this is a date, right? So this is a date when I'm gonna remove this. This is a date when I'm gonna apply, okay. Or it's September XX 2022. This is the month, date, say 20th. Okay. Now to the visa officer, Consulate General of Canada, and then the city and country where you are applying. So for example, apply करें New Delhi में, so you have to put New Delhi. If you are applying in say Dhaka, you have to put Dhaka, Bangladesh. You are applying in Sri Lanka, so जहाँ भी इसकी एम्बेसी है कनाडा की, काउंसलेट जनरल वहाँ का आपको नाम लिखना है. नेक्स्ट थिंग, सब्जेक्ट इनविटेशन लेटर फॉर. सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालो इनविटेशन लेटर फॉर मिस्टर, जस्ट एग्जांपल, जेम्स याप, राइट. तो इनका नाम डाल रहा हूँ मैं. सो इनविटेशन लेटर फॉर, नो ही इज माई इधर माई पेरेंट और माई ग्रैंड पेरेंट, राइट. नेक्स्ट थिंग इज डियर इमिग्रेशन ऑफिसर. You have to specify here, the person or name who is inviting. So suppose I am inviting and my name is, I'm putting my name here, okay. So I'm putting my name who is applying or inviting. That will be more specific. So who is inviting, okay, my name. So my name is Jacob, okay. So it's my name. Jacob currently working as. So मुझे specify करना मैं क्या काम करता हूँ. See, for example, I'm working as IT professional at your company name, okay. So for example, you're working at Google, okay. Whoever is inviting, okay, at Google, I and my. So now this is अगर आप, if you are say married, okay. So if you're married, to provide both the names of yourself and your wife, okay, vice versa, same. And अगर आप apply कर रहे हो just from yourself, you're not married, just provide your name, okay. So in this case, for example, I'm married, so I and my, say, spouse, okay, या my wife, ठीक है. So this is what you have to do. Now यहाँ पे मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा. Are working professionals, my wife work at say, again, Google. I'm just giving you an example here. I don't work for Google, but I'm just giving an example here as an IT professional at say Toronto, okay. Same here,
I can provide here Toronto. Our permanent resident details are as follows. So यहाँ पे आपको details provide करनी है. Now this is a letter, invitation letter that have been used. Okay, tested, tried, used. So this is a perfect letter, but you may want to add some things as and when requirement change. तो अगर आप वेबसाइट पे जाओगे गवर्नमेंट की, it will give you the exact specific. So ये जो specific है मैंने यहीं से लिए हैं. All the specific जो यहाँ पे letter में है मैंने यहीं से लिए हैं. But this might change. When this changes, you have to change, right? You have to live with the change. But अभी के लिए this is very well valid. ये ज़्यादा change नहीं होते हैं, to be honest. बहुत ही rarely change होते हैं, but it is what it is, right? So यहाँ पे आपको PR card number provide करना पड़ेगा. For example, I'll give you an example here. So PR card number, for example, it's 1111-1111. ठीक है. Now name of my wife. मैंने wife का नाम यहाँ नहीं provide किया. I and my wife. अगर my wife, say her name is Sandra. Okay, Sandra. So PR यहाँ पे नाम provide करना पड़ेगा. Put your full name, Sandra. So for example, G. I'll have to provide her date of birth. So date of birth is, say for example, January 1st, 1990. Okay, and I'll also provide my cell number. So I'll provide mobile number is +1 -647 111 -1111. ये phone number है हमारा. ठीक है. And then again you have to write the same thing. So PR card number is 2222-2222. And this is for myself. In this case, Jacob G. Okay, and then DOB is Feb 1990. Okay, this is not real, but I'm just putting it ताकि आपको समझ आ जाए. Yeah? Right, so +1 -647 777 7777. Okay, so this is just an example. ये बहुत ज़रूरी है मेंशन करना. Okay, so ये मैंने मेंशन कर दिया. उसके बाद I mentioned my resident address. So ये letter invitation letter है. So the person who is inviting is writing this letter. So you have to provide this address. So 1111 say Temporary Street, Toronto, और यहाँ पे postal code होगा आपका. It's in Ontario, and then L1F से जो भी होगा उनका. Okay, so this is what you have to provide. Okay, this is a postal code in Canada. Okay, so write out Canada. This is very important thing. Now अब इसमें आप समझा रहे हो इनको गवर्नमेंट को. See this letter is to confirm that you would like to invite, in this case, my mother. So मान लीजिए मैं अपने mother को बुला रहा हूँ. So यहाँ पे James Young लिखा था. So I'll put it father. So for example, I'm calling my father. So father James Young, residing in, कहाँ पे वो reside कर रहा है. So for example, he is residing in India. Okay, in this case, India, to temporarily unite with us in Toronto on a visitor visa or super visa. जो भी आपका केस होगा जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं. So for example, I'm applying for visitor visa. Visitor visa is 6 months. ठीक है. और super visa is like up to 5 years. You can call your parents. Now here I'm putting, please see below my details of my whoever it is, जो भी आपका relation है उनके साथ. So for example, it's father. So father, I have to provide her details. What details? उनका passport number. So I'm gonna write the father's name, James Young, and his date of birth. Okay, so January 31, 1970. ये उनका मैंने डाल दिया. प्लस
we need their passport number. So passport number is okay. So this is the passport number, for example. Now we can say I put it she because मैंने mother का पहले इसका format बनाया था. I'm just putting it father, so I'll change it to he. He will visit and stay with our family to spend quality time with us. And say for example, if you are saying with the family, with my wife, with my grandchild, right, etc., whatever you can mention. And so yeah, you have to provide how many persons is your father going to stay with. Okay, this is very mandatory for super visa, but you can provide time details here. So for example, you are calling your parent for a birth of a child, right? And so you can also mention that you are expecting the birth of your child on so and so date. You have to provide, suppose, a doctor letter, right? So you can also mention that. Okay, so you can say you would like to share the joy of the new arrival of my mother or your parent, right, or a father. So you can mention these kind of details here. So this will make your case more strong. Okay, so here we have written this down. So with us, and say for example our daughter and relatives during, यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है पीरियड, कब से कब आप बुला रहे हो. So you can say for example during say November 2022 to March 2023. Okay, so this is just an example, so I'm removing this part. Okay, now you can say my father और उनका name, so James Young, you can say Mr. James Young will be staying with us in our house located at the above address. So above address means this address, right? So this is your address, so you need to mention this. Okay, at the above specified address or above mentioned address. So ये लिखा हुआ है हमने, ठीक है. Now next we'll go it says details on the person inviting status and how will she support. Now this is the important part, very very important part. So यहाँ पे हमको provide करना पड़ेगा detail. So क्या detail provide करेंगे? I'll mention it here. So above mentioned address, right? So I'll provide here we, myself and my wife will be bearing all travel and उनके रहने खाने का, आने जाने का, so travel and lodging, living, boarding and health related expense. अगर super visa है then you need to have insurance as well, and you can say insurance as well, you can say that, and any other cost for my father during his stay in Canada. Okay. Now you have to show them we have enough funds. So you have to mention here we hold enough funds to bear all the expenses. So I'm just gonna write it down and then I'm gonna start the video here. So I have completed this. So we see here we, myself and my wife will be bearing all the travel expenses and lodging expenses, boarding expenses and health related expenses, insurance and all other costs for my father during his stay. Now we can say कि सारे expenses हम देखेंगे इसमें. We hold enough funds to bear all the expenses mentioned in this. I have been working with Google and my wife is at Google as well, with the annual salary of, say example, मैंने यहाँ पे सिर्फ example लिया 60,000, which is Canadian dollars of course. Enclosed, please find a letter from employer. So you have to attach the letter from the employer. एक letter लेना होगा कि you are working with Google, right? Letter of employment, and hold
joint bank accounts with the Royal Bank and Scotia Bank. So I'm just putting this as a dummy here, but whatever bank you have, उसका यहाँ पे details आपको लिख के, and कितना liquid cash है. Liquid cash means कितना आपके पास cash है in the form of cash, FD, like a fixed deposit, GIC, कितना है आपके पास. You have to mention this amount, and आपको उसका evidence लगाना पड़ेगा. Evidence means बैंक का एक statement लगाना पड़ेगा कि आपके पास इतना cash है that you can support your parents. आप अपने parents को support कर सकते हो इस पैसे से अगर आपको एकदम से जरूरत पड़ी तो, right? Now next you have to put, I know it's a long letter, but ये सब जो details हैं ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने मांगी हुई है, and you need this, right? And this will make it strong, okay? जितना ये प्रोवाइड करोगे, अमाउंट बढ़ा दोगे इसमें, you have more money, it's good, better, good salary, more salary, दोनों की ज़्यादा सैलरी मिला के, you know, you have like 120,000, 30,000 दोनों की मिला के, so it will make your case more stronger. I want to make sure your case is not rejected, and this will not let it reject, okay? I am submitting the following application with this request. So I have provided my employment letters, right? If applicable, कोई डॉक्टर को कोई ऐसा रीजन है जो आपको पेरेंट्स को बुलाना पड़ रहा है, तो आपको प्लीज स्पेसिफाई दैट. यू हैव टू प्रोवाइड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट एंड PR कार्ड. सो दिस इज लेटर इज बाय हु इज इनवाइटिंग. सो आपका कोई कनाडा में रहता है जो इनवाइट कर रहा है, हु इज अ PR और अ सिटीजन देयर इन कनाडा. सो यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. स्कैन्ड कॉपी ऑफ द बैंक स्टेटमेंट. सो ये पूरा जो है आपको डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आपका जो है बैंक स्टेटमेंट का जो कॉपी है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा. वो बैंक से मिल जाएगा या आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, राइट? सो नेक्स्ट थिंग इज what you need is, after the scanned copy, you need to provide my passport copy. So I'm applying for my father, so I have to show the relationship with my father. So my passport copy indicating relationship. Okay, this is very important part. कैसे आप प्रूव करोगे he is your father? So passport में आपका mention होगा, right, कि he is your father. So that is father's name. So attached below. So you have to attach this part here. Okay, this is the important part. So I'll make it say black in this case. Okay. Next thing, what you need is my birth certificate. So अगर उसका ट्रांजेक्शन, यू नीड अ ट्रांजेक्शन. सो सपोज आपकी कंट्री में वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में, सपोज इंडिया में हो तो हिंदी में, राइट? अफ्रीका में हो तो अफ्रीकन में, उस लैंग्वेज में है. सो यू नीड टू प्रोवाइड द ट्रांसलेशन एज वेल. सो माई बर्थ सर्टिफिकेट एंड इट्स ट्रांसलेशन इन इंग्लिश. अगर वो जो लेटर है दैट इज नॉट इन इंग्लिश, you have to provide that. Okay, so attached below. That's it. Now you have to provide here more things, little bit more things. After that you have to provide some other supporting documents. Attach an application under say proof of financial resource of supporter. So you have to provide. अब नीचे आपको एप्लीकेशन में सब डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, राइट? सो इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपको फॉर प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट दिखा रहे हो आप यहाँ पे, एंड देन स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट विच इज योर सपोर्ट. यू कैन अप्लाई पुट योर पे स्टब, योर T4s, your assessment, notice of assessment from government of Canada. ये सब आप प्रोवाइड कर रहे हो. So you are proving that yes, your income is stable, you have appropriate income, what is requested. लास्ट में आपको क्या बोलना है इसमें? I kindly request you to grant my parent name. So in this case it's James Young. Visitor visa आपको चाहिए, सुपर वीजा चाहिए. So you have to provide that details. कौन सा वीजा अप्लाई करो? So एग्जाम्पल मैं सुपर वीजा दे रहा हूँ. So सुपर वीजा, I am happy to provide any further information is required, and yours truly, the name of the person who is applying. So for example, in this case, Mr. Jacob G is applying. तो आपको जो पर्सन लेटर आपको प्रोवाइड करा, इन्विटेशन लेटर, उसका नाम बताना है यहाँ पे, एंड देयर फोन नंबर, राइट? एंड अगर आप इस केस में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अप्लाई कर रहे हो, सो यू हैव टू प्रोवाइड बोथ द नेम. सो योर टूली जैकब जी एंड सैंड्रा जी, दोनों का लिख के उनका फोन नंबर आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? ये फोन नंबर आपने ऊपर दे रखा है, इट्स वेल एंड गुड, बट नीचे भी आप प्रोवाइड कर दो.
ठीक है. So this is all is required for your invitation letter. This is really very important. Make sure you don't miss anything. Watch this video carefully. If you have any question, ask me please. Feel free to ask me in the comment section and I will be happy to answer it. But please इसको आप एक दो बार ठीक तरह वीडियो को देखो and make sure कि आपको सारी डिटेल्स मिल रही हैं. If you apply this invitation letter according to the format I provided, 99% I can guarantee, 100% तो कोई guarantee नहीं कर सकता, but 99.9% I can guarantee you will get through. Make sure you follow this Canadian government page. This provides any updated information required, so make sure you follow. I'll cover in the next video. Please friends, please do like the video and share the video and subscribe to the channel. That's very important. Okay, in next video I'm going to cover some other letters as well. Letter of support, proof of financial support, workplace travel. So please keep watching, subscribe to the channel so you get the video at the right time. Okay, thank you so much.